Okay, so now let us discuss about the thorax imaging. ठीक है, thorax imaging पे this is the third part of our radiology session है ना. फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर रेडियोलॉजी, और इसमें क्या है, thorax imaging. So now we'll start with thorax imaging, and very important questions comes from here. So look, what could be the possible diagnosis of this given X-ray of patient with history of previous TB infection? Previous TB infection, say what could be the possible diagnosis of this given X-ray? So look, here you are seeing some infiltrates like this. छोटा 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 आप दिख रहे हैं ना, ये एकदम मिलियरी ग्रेन्स की तरह दिख रहा है इस पे. सो दिस इज जनरली बायलैटरली randomly distributed nodules, small nodules that is bilaterally and randomly distributed on the chest X-ray, which you are seeing here. So this is the diagnosis of nothing but miliary TB. This is the miliary nodules जो छोटा छोटा है वो दिख रहा है जनरली चेस्ट एक्सरे पे, and this is giving us the diagnosis of generally miliary TB. So this what is miliary TB? Miliary TB is the bilateral randomly distributed nodules will be seen. The spread will be hematogenous, and differential diagnosis for miliary nodules on generally chest X-ray will be generally healed varicella, tropical pulmonary eosinophilia, hemosiderosis and histoplasmosis. ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस. तो प्रीवियस टीबी इन्फेक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ तो नहीं दिया जिससे हेमोसिड्रोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस वी कैन कंसीडर द डायग्नोसिस हियर. सो द बेस्ट आंसर हियर विल बी जनरली आवर miliary TB. So miliary TB is our answer in this question. Let's move ahead. What is the possible diagnosis of the given X-ray? The given X-ray here, it is showing like this. This is generally nothing but the gas under generally diaphragm sign. This is gas under diaphragm sign. So this is generally a case of pneumoperitoneum. ठीक है, pneumoperitoneum gas under the generally diaphragm sign. So look here. Okay. Look. Clinical features will be acute abdominal pain, rigidity, tenderness, and guarding will be there. Most sensitive X-ray view will be CXR, PA erect view. ठीक है, PA erect view will be the most sensitive view here, and most sensitive investigation will be CECT with oral contrast. Next step is to go for resuscitation with IV fluids and exploratory laparotomy. ठीक है, exploratory laparotomy. Next देखो, identify the condition given in the chest X-ray. Given in the chest X-ray, what is the generally condition in the given chest X-ray? So look, this chest X-ray is showing us. Look, यहाँ पे आपको देखना है, कहीं और मत जाना, बस यहीं पे देखो, ये वाला. Just look at this side. ये नीचे, this is white shadow here. ठीक है, white, and here is the black one. The upper level is black. Black means generally what? Air, and the lower is generally white. White means generally what? Generally this is crescent of air. This air is forming like this, crescent of air. This is crescent of air. Crescent का साइन ऐसे फॉर्म कर रहा है. So this is crescent of sign. So this is generally crescent of air sign. This is generally seen in the case of aspergilloma. ठीक है, aspergilloma. So this is aspergilloma, fungal ball which is mobile. This is complete is a fungal ball which is mobile, and air crescent sign or monad sign. You must remember two things: air crescent sign or monad sign. And this is generally air surrounding a fungal wall in a pre-existing pulmonary cavity. ऊपर वाला cavity और नीचे वाला, this is nothing but the fungal ball. The नीचे वाला is the fungal ball है ना, this is a fungal ball, and this is the air cavity. This is the air cavity. So this is generally due to the soft tissue. This appearance on this side is also due to the soft tissue present there. So next, let's move ahead. थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. These aspergillomas are like generally like mass-like fungus balls that are typically composed of Aspergillus fumigatus and is a non-invasive form of pulmonary aspergillosis. CXR पे aspergillomas typically appear as rounded or ovoid soft tissue attenuating masses located in the surrounding cavity and generally outlined by a crescent of air. This is known as meniscus sign or air crescent sign. Monad sign भी हमने अभी पढ़ा. CT appendices are those of a well-formed cavity with a central soft tissue attenuating round mass surrounded by an air crescent sign or a monad sign. ये monad sign generally हमको किस पे मिलेगा? This monad sign you will be generally viewing in generally CT है ना, CT पे आपको view होगा, and generally ये जो हमको यहाँ पे view हो रहा है, this is X-ray वाला view है. So this is X-ray पे हमको क्या view हो रहा है? Identified the given, this is aspergilloma, और CXR पे हमको क्या view हो रहा है? That is nothing but air crescent sign. Monad sign कहाँ पे होगा? CT पे generally हमको view होगा. ठीक है, CT पे generally view होगा.
Bronchogenic carcinoma with collapsed lung, the golden S sign, reverse S sign of golden is seen with right upper collapse. ये generally किसमें golden S sign and highlighted cyst. The CXR will show a boundary of a cystic lesion in right middle and lower lobe. Right middle and lower lobe. यहाँ पे आप देख लो lung abscess में generally X-ray the classical appearance of a pulmonary abscess is cavity containing air fluid level. ये देखो air level और ये नीचे का fluid level, ठीक है. So air fluid level बीच में क्लियर डिमार्केशन दिखेगा. दिस इज जनरली लंग एब्सेस. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस एक्सरेज, वेरी इंपॉर्टेंट. आगे चलो. 27-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इनिशियल and the following chest x-ray, what would be the likely diagnosis here? What would be the likely diagnosis in this case? So in this case, look, एक साइड पूरा का पूरा ओपेक दिख रहा है ना, और दूसरे साइड ये देखो लंग इधर आ गया एंड जनरली दिस इज जनरली लंग जहाँ पे एयर है. सो दिस इज जनरली ब्लैक दिख रहा है. सो यहाँ पे जनरली क्या है, एयर है. सो दिस इज जनरली राइट साइडेड ओपेक हेमीथोरैक्स, ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू कॉन्ट्रालैटरल साइड एंड जनरली दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन. ये देखो राइट साइडेड ओपेक हेमीथोरैक्स, राइट साइड में जनरली क्या है, ओपेक hemithorax is there. This is right side, this is left side. So this is generally right sided hemithorax, right sided hemithorax. Trachea is generally deviated. Look, this trachea is deviated to generally contralateral side. Diagnosis क्या हो जाएगा, pleural effusion. So this is the case of pleural effusion. Why it is not lung collapse? Lung collapse में there will be tracheal deviation on the ipsilateral side. Here the tracheal deviation is on the contralateral side. मानो इस साइड पे प्रॉब्लम है तो उस साइड trachea deviate हो रहा है. That is contralateral deviation of generally the trachea. Lung consolidation में generally क्या हो जाएगा, increased lung attenuation sufficient to obscure bronchial walls and blood vessels, and generally on radiography it appears as air bronchogram within opacity which is otherwise generally homogeneous. Next देखो, why is this not a pneumothorax? Because hypertranslucent lung with absent vascular markings is generally the characteristic finding in case of the pneumothorax. This is so pleural effusion. This is the case of pleural effusion. आगे चलिए देखते हैं. Next is a 35-year-old smoker came to you with a complaint of weight loss. A chest X-ray was taken, which is given here. Identify the lesions seen in the following image. So in the following image, you are seeing like this opacification, small opacifications you are seeing here, है ना? And this opacification, that is bilateral multiple opacities are seen on the both sides. Bilateral multiple opacities are seen. This is nothing but cannonball metastasis. Cannonball metastasis. Cause is most common cause or the primary cause is lung carcinoma, and others causes like renal cell carcinoma, follicular carcinoma, thyroid and choriocarcinoma can be the other causes of this cannonball metastasis. So very important, this is cannonball metastasis. This is cannonball metastasis. A chronic smoker comes to the OPD with complaint of the daily purulent sputum production. Identify the condition given in this image. So in this image, the history of chronic smoker comes to the OPD with complaints of daily purulent sputum production. लुक इन दिस कंडीशन इफ यू आर सीइंग हियर, ये देखो ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये डायलेटेड दिख रहा है. सो दिस इज जनरली नथिंग बट ब्रोंकिएक्टेसिस. दिस इज नथिंग बट ब्रोंकिएक्टेसिस, मोस्ट कॉमन इन एल्डरली पेशेंट्स. पेशेंट प्रेजेंट्स विथ कफ एंड स्प्यूटम, जो कि दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में. मोस्ट कॉमन लोब अफेक्टेड इज लोअर लोब्स एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी HRCT. ये जनरली चेस्ट एक्सरे पे हमको उतना अच्छा दिखेगा नहीं. वी हैव टू जस्ट सी दिस इन द HRCT. ठीक है, HRCT साइंस विल बी जनरली ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. ब्रोंकाई लाई पैरेलल to each other. The bronchi will be lying parallel to each other. ये देखो ये tram track appearance will be there. There will be ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. ये ट्रैम ट्रैक जिस पे जनरली रेलवे जैसा चलता है ना, ट्रैम जिस पे चलता है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस. सो दैट इज जनरली ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस सीन इन केस ऑफ जनरली ब्रोंकिएक्टेसिस. द ब्रोंकाई लाइज पैरेलल टू ईच अदर. ब्रोंकिएक्टेसिस यानी कि ब्रोंकस का जनरली वाइडनिंग हो गया. सो नेक्स्ट सिग्नेट रिंग. सिग्नेट रिंग साइन, दैट इज ब्रोंकाई बिकम कंपैरेटिवली लार्जर देन एडजेसेंट पल्मोनरी वेसल. अगर ऐसे देखो ये है ना, और यहाँ पे ऐसे दिखेगा, सिग्नेट रिंग की तरह दिखेगा. सो ब्रोंकाई जनरली बिकम्स कंपैरेटिवली लार्जर देन एडजेसेंट पल्मोनरी वेसल. दोनों चीज में हमको क्या पता चल रहा है कि ब्रोंकिएक्टेसिस यानी कि ब्रोंकाई डायलेटेड हो गया. सो दिस इज जनरली सिग्नेट रिंग साइन, कैन ओनली बी सीन ऑन CT स्कैन, नेवर ऑन जनरली एक्सरे. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज HRCT and सिग्नेट रिंग साइन, दैट इज एयर फील्ड ब्रोंकस इज जनरली द answer here for bronchiectasis. A patient came to the emergency with sharp stabbing pain in chest and X-ray was taken. Identify this condition. Sharp stabbing pain was there in the chest and this X-ray was taken. And this X-ray यहाँ पे देखो, ये this X-ray जो हमको दिख रहा है ना, ये X-ray में हम क्या देख रहे हैं. So generally this is nothing but
यहाँ पे देखो हाइपर, ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। दिस एक्सरे इज सीन वेरी ब्लैक, जनरली दिस मच ब्लैक एक्सरे वी डोंट सी इन केस ऑफ नॉर्मल सी, ठीक है। इन नॉर्मल सी विल सी सम vascular markings here also, the vascular markings will be here also, but this is completely generally air field, that is complete dark lungs we are seeing. So this is generally loss of vascular markings are also here, loss of vascular है ना markings are also seen here, no vascular markings you are able to see. So this is the case of clear cut case of pneumothorax. There will be air in the thorax. Next, the following appearance is present. In the following appearance, look, again this is nothing but cannonball metastasis. So this is cannonball metastasis, we have already seen. और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ TB, bronchiogenic carcinoma, hematoma and metastasis. So cannonball metastasis, so the answer will be metastasis. Why not bronchogenic carcinoma? Because cavity or consolidation in upper lobe on one side only will be there. Hematoma में there will be popcorn calcification. None of these which we are seeing here. In this case we are seeing none of these मेंशनड थिंग्स। आगे चलो, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस हेयर? लाइकली डायरेक्ट यहाँ पे सिटी दिया हुआ है, डायरेक्ट पूछ दे रहा है। यहाँ पे देखो ये कैल्सिफिकेशन है यहाँ पे, है ना, दिस इज जनरली अ कैल्सिफिकेशन सीन। सो दिस इज राउंड लीजन विथ इरेगुलर कैल्सिफिकेशन इन मिडल ऑफ द लंग विंडो, इन मिडल ऑफ द लंग विंडो। दिस इज अ पॉपकॉर्न अपीयरेंस एंड दिस पॉपकॉर्न अपीयरेंस इज जनरली सीन, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, दैट इज हेमाटोमा। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द डिवाइस सोन। हेड ऑफ द डिवाइस जो जनरली यहाँ पे दिया गया है वो कहाँ पर है? सो लुक, वेयर इज दिस हेड ऑफ द डिवाइस लोकेटेड, है ना, ये यहाँ पे जनरली इस एंगल पर जनरली हमको दिखा दे रहा है। एंड दिस इज जनरली, ये कौन सा है, ये देखो यहाँ पे इस एक्सरे के साथ, जनरली इस व्यू के साथ, यू हैव टू जस्ट कंपेयर दिस। सो लुक, दिस इज जनरली नथिंग बट आवर राइट वेंट्रिकल हेयर फ्रॉम दिस एक्सरे। ये पीछे में आ जाएगा हमारा राइट एट्रियम आ जाएगा, है ना, ये ऊपर जाओगे यहाँ पे अओर्टा आ जाएगा, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगा, है ना, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा। सो ऐसे दिस इज द राइट वेंट्रिकल। सो दिस इज जनरली right ventricle. So our answer will be right ventricle. A 30-year-old patient presents with high grade fever and productive cough. Comment on the CXR finding below. High grade fever there and productive cough is also there. So comment on the CXR. So in this CXR, यहाँ पे देखो, this they are giving here. What is this? This is nothing but right middle lobe consolidation. ये देखो right, है ना, this is middle lobe and this is generally the consolidation seen here. So this is right middle lobe consolidation seen here. Okay, so now in this generally you have to see 2 or 3 things more. Look, right lower lobe consolidation, right hydrated seat, right sided ventration diagram and right middle lobe consolidation. यहाँ पे आंसर हो जाएगा right middle lobe consolidation. And there will be generally silhouette sign. Silhouette sign क्या होता है? Silhouette sign means generally when markings of the heart are not visible. If the markings of the heart are not visible, so that is nothing but silhouette positive localized to middle lobe, and this is generally seen with the infections which are localized to middle lobe. And when markings of the heart are visible, that is silhouette negative, and generally that is localized to the lower lobe in cases of lower lobe infections. अगर मैं right middle zone pneumonia की बात करूँ, so generally this is the right middle zone generally pneumonia. And in this case, in this appearance, है ना, notice the 2 red lines in lateral view that are representing the middle lobe which is present anteriorly. Middle lobe is generally present anteriorly. Right lower zone pneumonia की अगर मैं बात करूँ, notice that the lower lobe in lateral view is present more posteriorly. Also notice that the lower lobe consolidation in PA view will not cause significant obliteration of the right heart border. Okay, you got this. So this is generally the सिलेट पॉजिटिव एंड सिलेट नेगेटिव भी हमको पता करना है। एंड दिस इज जनरली केस ऑफ राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन. राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन. अ 40-year-old man had road traffic accident. He is having shortness of breath and chest pain. CXR don't show. The CXR has been done and you are just getting this lung की जो vascular markings है. So the vascular lung age is here, है ना. This is vascular lung and this is no vascular markings are present in this area. This area में there is no vascular marking and this is hyper more generally more dark lung field is there. So this is deep sulcus sign. और ऐसे यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? deep sulcus sign. So this is generally case of pneumothorax. This is case of pneumothorax. Hemothorax में there will be blunting of CP angle, है ना. lung contusion में segmental defect in one lung will be there and diaphragmatic tear में there will be herniation of bowel contents into the chest wall. ठीक है, herniation of bowel contents into the chest wall. A patient presents after 10 weeks of acute pancreatitis. Diagnosis after 10 weeks of acute pancreatitis. So the diagnosis, look,
व्हाट यू आर एबल टू सी हेयर, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सिटी है ना, सिटी में जनरली ऑर्गेन्स हमको फाइंड करना आता है. सो लुक, दिस इज जनरली हाइपोडेंस शैडो ऑफ फ्लूइड कलेक्शन इन द पैरेन्काइमा ऑफ द पैनक्रियाज. पैरेन्काइमा ऑफ द पैनक्रियाज. हिस्ट्री ऑफ acute pancreatitis is already given, and now fluid collection of pancreatic tissue on CT abdomen is seen. So this is giving us the diagnosis of pseudo pancreatic cyst. Already acute pancreatitis की history दी हुई है, and now on the given CT you are seeing the fluid collection on pancreatic tissue. So this is the pseudo pancreatic cyst. It is called pseudo because the wall is made up of fibrotic tissue rather than plain epithelial lining. Plain epithelial lining. So this is a case of pancreatic pseudocyst. A 50-year-old patient presents with breathlessness and pedal edema for last 3 months. Past medical history is significant for tuberculosis. A chest radiography is taken and shown below. What is the likely diagnosis? What is the likely diagnosis in this case here? Look, you are simply seeing this. ऐसा हमको दिख रहा है, पूरा opacification ऐसा दिख रहा है. So this is generally water bottle appearance, and this water bottle appearance is the classical scene in the case of pericardial effusion. Water bottle appearance, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, बस इतना याद रखना है हमको. कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देयर विल बी पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन विथ नॉर्मल सीटी रेशियो. नॉर्मल सीटी रेशियो विल बी देयर, एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में देयर विल बी सीटी रेशियो विल बी इंक्रीज्ड with pulmonary edema, but this X-ray generally shows normal vascular cytos. Normal vascular cytos are there, so it cannot be dilated cardiomyopathy. Whereas in cardiac tamponade there will be Beck's triad or pulsus paradoxus will be seen, and echocardiography is generally required for generally the cardiac tamponade. ठीक है, cardiac tamponade. A cattle handler from a village with cough, hemoptysis and chest pain underwent a chest radiograph and is shown below. What is the probable diagnosis? Cattle handler है, याद रखो, ठीक है, cattle handler है. और यहाँ पे देखो, ये नीचे फ्लूइड दिख रहा है, ये एयर दिख रहा है. सो लुक, दिस इज द राइट मिडल लोब बाउंड्री ऑफ सिस्टिक लीजन है ना. बाउंड्री ऑफ सिस्टिक लीजन इज हेयर, हेयर इज द कंप्लीट एयर, एंड दिस इज द लोअर लोब, एंड यहाँ पे जनरली फ्लूइड दिख रहा है नीचे में. सो दिस इज नथिंग बट अ केस ऑफ हाइडाटिड सिस्ट. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ हाइडाटिड सिस्ट. यू कैन see this markings here. So this is hydatid cyst. Look, clinical signs in hydatid diseases. In hydatid diseases, you must notice some clinical signs. Combo sign. Combo sign means air between the pericyst and the laminated membrane of the cyst. Serpent sign means internal rupture of the cyst with collapse of the membranes of parasite into the cyst. A spin or whorl sign, where detached membrane with a small pleural reaction seen in the hydatid cyst of the lung, whereas the empty cyst sign generally may be seen after complete evacuation of the parasitic membranes. Complete evacuation of the parasitic membranes में जनरली दिखेंगे. Byssinosis. Byssinosis क्या है? Pulmonary fibrosis and shrunken lungs will be seen in case of the byssinosis. Bagasosis, बाइसिनोसिस, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे करी थी? जनरली न्यूमोकोनियोसिस में, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर पीएसएम. पीएसएम से 35 मार्क्स की क्वेश्चंस आती है. सो यू मस्ट रिवाइज इट वंस बिफोर योर एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट है ना. एंड इफ यू जस्ट रिवाइज इट वंस यू विल बी एबल टू स्कोर 30 मार्क्स जितना आप कर सकते हो स्कोर. एंथ्रैक्स की अगर मैं बात करूँ, सो एंथ्रैक्स जनरली बायलैटरल न्यूमोनिया एट plus generally hemorrhage of mediastinus will be there, and in case of lung abscess you can just be a little bit confused here क्योंकि cattle handler का दिया हुआ है. so you can go with anthrax, but anthrax में there will be bilateral pneumonia plus hemorrhage, mediastinosis will be there. ठीक है. lung abscess के केस में जनरली देयर विल बी circumscribed shadow with an air fluid level due to the pus settling at the dependent part of the abscess. So this is generally lung abscess. A 30-year-old patient presents with high grade fever, chills and cough with a sputum. Radiograph taken is shown. What is the likely diagnosis? Presents with high grade fever, chills and cough with a sputum. High grade fever, chills with cough and generally a sputum. So the diagnosis is generally going towards right middle lobe consolidation. Again the same thing, right middle lobe consolidation. यहाँ पे alveolar opacities right middle zone में दिख रहा है. So this is generally right middle lobe consolidation, and generally consolidation means generally क्या होता है? तो look, consolidation, right middle lobe consolidation या फिर upper lobe consolidation, anything you say, but in the last you are mentioning consolidation. What is the meaning of the consolidation? Consolidation means pathological alveoli filled with fluid. Pathologically the alveoli are now filled with the fluid. This is called as consolidation. Generally alveoli must be filled with what? It must be filled with air, but now it is filled with fluid. But this is some due to some pathology, secondary to some pathology, and that's why it is called as consolidation. Air bronchogram sign will be there. Bronchi is filled with air and rest of the lung is opaque, and rest of the lung is opaque. But best, it is best noted on the CT scan and on CXR alveolar opacification, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया. This alveolar opacification is seen.
एंड एटिलेक्टेसिस में आप कंफ्यूज हो सकते हो. लुक, एटिलेक्टेसिस वर्सेस जनरली कंसोलिडेशन. सो लुक, एटिलेक्टेसिस इज आल्सो वाइट. एटिलेक्टेसिस इज आल्सो वाइट ऑन CXR, बट जनरली इट shows curvature in the lung features. ठीक है, but it shows curvature in the lung features, which is generally not seen in case of consolidation. A 45-year-old female came for post-surgery follow-up. A CXR was taken. What is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis क्या होगा? A 45-year-old female came for post-surgery follow-up. Look, in this case, what is the likely diagnosis? इसमें आप क्या नहीं दिख रहे हो? जनरली 45-year-old female came for post surgery follow up, means she had some surgery. So a CXR was taken, and this CXR, after seeing this, here you are seeing generally a shadow of the breast. लेडी है, shadow of the breast दिख रहा है. Absent breast shadow on left side. इस साइड पे आपको breast की shadow नहीं दिख रही है. So you are not able to see the breast shadow on this side, on the left side. So this is generally trachea central है, and lung parenchyma is normal. Bronchovascular marking is also normal. So और कोई जनरली पैथोलॉजी यहाँ पे नहीं है. बस सिंपली क्या है, लेफ्ट साइड में जनरली ब्रेस्ट शैडो नहीं दिख रहा है. सो दिस इज जनरली अ क्लियर कट केस ऑफ. लुक, आई अगेन इरेज दिस, एंड नाउ यू सी इट अगेन. यू सी इट अगेन. यहाँ पे देखो, ये देखो, ये शैडो दिख रहा है ब्रेस्ट का, बट दिस साइड यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द शैडो ऑफ द ब्रेस्ट. सो दिस इज जनरली अ केस ऑफ लेफ्ट साइडेड मैस्टेक्टॉमी. पोस्ट सर्जरी का भी जनरली वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया. सो दिस इज लेफ्ट साइडेड मैस्टेक्टॉमी. लेफ्ट साइडेड मैस्टेक्टॉमी. दिस इज fibroadenoma? No, this is not fibroadenoma, because in fibroadenoma there will be well defined smooth mobile lesions with dystrophic calcification, that is the popcorn calcification on the breast will be seen in case of fibroadenoma. So this is not a fibroadenoma. Popcorn calcification is not seen here. A 33-year-old female with fever, weight loss, elevated levels of ACE levels, that is angiotensin converting enzymes, are elevated with hilar lymphadenopathy on X-ray. What is the probable diagnosis? So here look, lymph nodes enlarged, bilaterally lymph nodes क्या हो गए हैं, enlarged हो गए. Look, this is the lymph nodes which we are generally visualizing as a large, क्योंकि छोटे रहते तो ऐसा नहीं दिखता है, but this is now enlarged and it is bilaterally on both side it has been enlarged. So lymph nodes are enlarged here. So this is the case of sarcoidosis. This is the case of sarcoidosis. How? Look, sarcoidosis में generally there will be history of young female, fever with dry cough, bilateral hilar lymph node enlargement. बस ये चीज़ें समझ आ गई तो you will be good to go with your answer. Next is non-casiatic, non-necrotic lymph nodes, that is sarcoidosis, and increased ACE level. Again, this is the very important buzzword here. Increased ACE level and hypercalcemia will be there. CXR पे 1 2 3 साइन और गार्लैंड साइन है ना, गार्लैंड साइन है, गार्लैंड साइन ऐसा दिख रहा है हमको. गैलियम स्कैन पे विल सी लैम्डा और पैंडा साइन. ठीक है, लैम्डा और पैंडा साइन. A 2-year-old child presents with sudden onset of breathlessness, wheezing, and decreased breath sounds in right lung. Chest radiograph shows diffuse opacity in right hemithorax. What is the probable diagnosis? Probable diagnosis will be what? So here look, 2-year-old बच्चे का एक हिस्ट्री दिया हुआ है विथ सडन ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस, व्हीजिंग, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स इन राइट लंग्स. चेस्ट रेडियोग्राफ शोज डिफ्यूज ओपेसिटी इन राइट हेमिथोरैक्स. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स बच्चे का है. सो देयर विल बी जनरली ब्रेथलेसनेस एंड एवरीथिंग. दिस इज सजेस्टिव ऑफ जनरली द फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन. ब्रोंकियल अस्थमा में इट शोज हाइपर इन्फ्लेशन ऑन जनरली CXR, whereas in pneumonia there will be, it does not, it will not be having sudden respiratory difficulty in case of pneumonia, because this is a long condition. Not suddenly the baby will not have sudden respiratory difficulty. Pneumothorax में there will be hypertranslucent lung, but here that is also not given. So it is the foreign body aspiration. Identify the findings given in the X-ray. In this X-ray, look, this is air and this is generally fluid. So this is air fluid level seen. So that is hydropneumothorax. Hydropneumothorax ऊपर पूरा air है, नीचे this is the fluid है. So two compartments are seen. That is pneumo or hydro. So this is ऊपर air, that is air is pneumo, नीचे we have fluid, that is hydro. So hydropneumothorax, hydropneumothorax. Cardiac tamponade में there will be increased CT ratio. In case of lower pneumonia, lower lobe pneumonia, there will be generally straight well defined margins will not be there. Doesn't have the straight well defined margins, whereas here we have a straight well defined margin is seen in case of hydropneumothorax. Comment on the diagnosis of CT chest shown below. CT chest shown below.
यहाँ पे देखो इस सिटी चेस्ट में जनरली ये क्या है, देखो यहाँ पे दिस इज नथिंग बट असेंडिंग ऑर्टा है ना। और यहाँ पे ये देखो इसमें जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ट्रू ल्यूमेन एंड दिस इज द फॉल्स ल्यूमेन, ट्रू ल्यूमेन एंड फॉल्स ल्यूमेन, टू ल्यूमेन्स आर बीइंग सीन। सो दिस इज द केस ऑफ जनरली ऑर्टिक डाइसेक्शन, ऑर्टा में डाइसेक्शन हो गया, सो दिस इज ऑर्टिक डाइसेक्शन, ठीक है, दिस इज ऑर्टिक डाइसेक्शन। ये देखो असेंडिंग ऑर्टा है ना यहाँ पे, ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्टा में जनरली टू ल्यूमेन्स दिख रहे हैं, सो दिस इज जनरली ऑर्टिक डाइसेक्शन। एंड यहाँ पे देखो ये डिसेंडिंग ऑर्टा, और डिसेंडिंग ऑर्टा में अगेन वी आर सीइंग जनरली टू जनरली ल्यूमेन्स, ये ट्रू ल्यूमेन ऊपर वाला और नीचे वाला फॉल्स ल्यूमेन। सो दिस इज जनरली टू ल्यूमेन, एक ऊपर वाला दैट इज ऊपर वाला दैट इज असेंडिंग ऑर्टा और नीचे वाला डिसेंडिंग ऑर्टा। सो दिस इज बोथ, इन बोथ वी आर सीइंग जनरली separation there, or a true or false two lumens are there. So this is the case of aortic dissection, or dissection is there, that is aortic dissection. इसमें true lumen और false lumen कैसे दिखना है, so the true lumens is more whiter, ठीक है, दोनों में देखो which is more whiter, that is a true lumen, that is the true lumen। आगे चलो देखते हैं, which is used for calculation of ejection fraction, calculation of ejection fraction के लिए, ejection fraction के लिए what will use, will use MUGA, MUGA is nothing but multiple uptake gated acquisition angiography, generally used for calculation of ejection fraction, ठीक है। और ये BCD that is SPECT using thallium 201, PET myocardial perfusion imaging, systemic scan with pharmacological stress, this all are generally used for angiographically significant coronary artery diseases, not for जनरली इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए हम इसको यूज नहीं करते। द सोन रेडियोग्राफ इज अ केस ऑफ, द सोन रेडियोग्राफ इज अ केस ऑफ, सो दिस रेडियोग्राफ हियर यू आर सीइंग, यहाँ पे देखो ऊपर में ये यू आर सीइंग दिस, ये देखो ये दिस इज नथिंग बट बाउल साइन है ना, बाउल लूप साइन, दैट इज बाउल लूप साइन व्हिच इज बीइंग सीन इन द thoracic cavity। सो इन द thoracic cavity बाउल लूप साइन इज सीन, दिस इज द एब्सेंस ऑफ बाउल इन द लूप्स इन द जनरली एब्डोमेन, एब्डोमेन में बाउल है ना, बाउल कहाँ पे चला गया, बाउल हैज गॉन टू thoracic cavity, सो दिस इज जनरली डायफ्रैग्मेटिक hernia, this is the case of diaphragmatic hernia। in the shown lateral view of chest x-ray what is the structure marked with x और white arrow, x से और या फिर ये white arrow जो है इससे क्या मार्क कर रहे हैं, in this case in the shown lateral view of x-ray। सो दिस इज जनरली यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ऑर्टिक आर्च, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द बिलो विल बी द कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। सो दिस इज द केस ऑफ जनरली, यहाँ पे अगर आप इसको देखना चाहते हो, सो दिस इज नथिंग बट ट्रैकिया, यहाँ पे देखो एयर भी है इसमें फील्ड, सो दिस इज ट्रैकिया नॉट इसोफेगस, दिस इज ट्रैकिया दिस इज ट्रैकिया। आगे देखो, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विथ जनरली कंप्लेंट्स ऑफ लो ग्रेड फीवर विथ डिस्निया, लो ग्रेड फीवर विथ डिस्निया, लो ग्रेड फीवर प्लस डिस्निया, एक्सरे इज सजेस्टिव ऑफ, लुक यहाँ पे देखो इतना ही लंग्स इतना रह गया, ये नीचे पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ओपेसिटी आ गया। सो जनरली नो एयर इज बिलो हेयर, सो एयर इज ओनली फाउंड अप टू दिस एंड देयर इज सम लंग टिश्यू हेयर ओनली। सो दिस इज लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, साइन इज मेनिस्कस साइन और एलिस एस कर्व, एलिस एस कर्व इज देयर एंड जनरली अर्लीस्ट फाइंडिंग विल बी ब्लंटिंग ऑफ CP एंगल, mediastinal shift that is contralateral mediastinal shift, most sensitive investigation is USG and most sensitive X-ray will be ipsilateral lateral decubitus followed by the erect position। So this is exudative pleural effusion। Hydropneumothorax has clear demarcation between air fluid level, air fluid level में clear demarcation रहता है यहाँ पे, so that will be hydrofluid, hydro generally pneumothorax। अगर ऊपर air है नीचे क्या है आपको, air means pneumo है ना, नीचे क्लियर डिमार्केशन इज देयर एंड द बिलो देयर विल बी जनरली वाटर, सो वाटर और फ्लूइड दैट इज नथिंग बट हाइड्रो, हाइड्रो, सो ये क्या हो जाएगा हाइड्रो न्यूमो, और कहाँ पर है थोरैक्स में, सो दैट विल बी हाइड्रो न्यूमो थोरैक्स, हैज क्लियर डिमार्केशन, देयर इज नो क्लियर डिमार्केशन, हियर वी आर सीइंग मेनिस्कस साइन और दैट इज एलिस एस कर्व वी आर सीइंग, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है, दैट इज द केस ऑफ एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। द lateral view of X-ray lung shows, this lateral view of X-ray lung is showing, this is nothing but the major fissure, how, look ये देखो ये मेजर फीजर है, यहाँ पे देखो ये दिस विल बी द माइनर फीजर है ना, ये देखो लेफ्ट मेजर फीजर एंड दिस विल बी द राइट मेजर फीजर। सो यहाँ पे ये पूरा पूछ रहे हैं हमसे, सो दिस इज जनरली आवर मेजर फीजर, दिस इज मेजर फीजर। और चेस्ट इज सोन, और चेस्ट सिटी इज सोन, सिटी चेस्ट इज सोन बिलो, व्हाट इज द डायग्नोसिस, इसमें डायग्नोसिस क्या है, लुक
यार अगेन ये देखो आप सामने से जा रहा है, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट मोर, ये सामने से जा रहा है ना, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ ट्रैम ट्रैक साइन, ट्रैम ट्रैक साइन। सो ट्रैम ट्रैक साइन इन सीन इन केस ऑफ ब्रोंकी एक्टेसिस, ब्रोंकी एक्टेसिस। और इसमें कैसा भी दिखता है, सिग्नेट सिग्नेट शेप भी दिखता है। लुक आई विल शो यू, यहाँ पे देखो। सो दिस इज जनरली tram track sign है ना, दिस इज tram track sign एंड हेयर यू आर बी यू विल बी एबल टू सी द ब्रोंकस है ना, ये ब्रोंकस है, इसमें एयर होगा और उस पर छोटा सा ऊपर ऐसे दिखेगा, दैट इज नथिंग बट भेसल विल बी सीन। सो दैट इज भेसल से ज़्यादा डायलेटेड ब्रोंकस, सो दैट इज ब्रोंकी एक्टेसिस। दिस इज ब्रोंकी एक्टेसिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी HRCT सिग्नेटरिंग साइन, दैट इज द एयर फील्ड ब्रोंकस विल बी सीन, एयर फील्ड ब्रोंकस विल बी सीन। इसमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ फोकल में जनरली ऑब्स्ट्रक्शन एंड मास, दैट इज इन केस ऑफ ग्रैन्युलोमा और कैंसर। बायलेटरल अपर लोब्स में सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाएगा। यूनिलैटरल अपर लोब में हो गया तो दैट विल बी TB प्लस फिब्रोटिक चेंज, दैट इज कैविटेशन और जनरली कॉपर विल बी देयर। मिडिल लोब्स में जनरली प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया, जिसको हम काटाचिनर सिंड्रोम बोलते हैं। नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबायोटियम, दैट इज लेडी विंडमियर सिंड्रोम। ठीक है, इतना आप समझ लो, बस ये दो चीज़ें समझो आप। ठीक है, irreversible dilatation of bronchi, that is nothing but bronchiectasis. ठीक है, bronchiectasis. So this much you just remember here. The Stone investigation, ये यहाँ पे bird beak appearance, this is nothing but achalasia cardia, achalasia cardia. This is generally achalasia cardia हमने कर लिया। बट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या है, बैरियम इनीमा, बैरियम swallow, प्लेन एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी। व्हाट इज दिस? सो दिस इज जनरली a case of barium swallow, not barium enema. This is a case of barium swallow. Barium swallow is generally used for esophageal disorders. It is used for esophageal disorders, whereas barium enema is used for generally colon disorders. ठीक है, colon disorders. फ्लोरोस्कोपी की बात करूँ जनरली, या फिर यहाँ पे मैं आपको बात करूँ barium meal follow through, that will be generally used for diagnosing the cases of generally a small intestine. So you must know barium enema, barium meal follow through and barium solo. Barium solo will be used for esophageal disorder and a barium enema will be used for colon and generally fluoroscopy. Fluoroscopy I'm telling you barium meal follow through will be for small intestine pathologies. So look, identify the pathology in the given chest x-ray. So in this given chest x-ray you are seeing a boot shaped or core in sabo. ठीक है, boot shaped or core in sabo. So that is nothing but boot shaped heart or core in sabo. This is the tetralogy of Fallot. और tetralogy of Fallot के components क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, boot shaped heart जिसकी वजह से हो रहा है, VSD that is ventricular septal defect, overriding of aorta and pulmonary stenosis will be there. So this is the case of TOF, that is tetralogy of Fallot, boot shaped or core in sabo. Again this question will be asked in your pedia also, so very important. ठीक है, आगे देखो, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में देयर विल बी एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस. इन केसेस ऑफ पेरिकार्डियल effusion there will be water bottle or leader bottle appearance. Already you have seen this. In the CECT structure shown below, what is the structure marked with arrow? In this structure, this is the, ये ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा, ऐसा जा रहा. So this is the main pulmonary artery. This is the main pulmonary artery. Look it here, main pulmonary artery which will be dividing into right pulmonary and generally the left pulmonary artery. ये हमारा क्या होगा, ascending aorta, और ये descending aorta. अगर यहाँ पे क्या है, ascending aorta या फिर कोई भी aorta में जनरली क्या हो रहा है, if there is some dissection, two lumens are seen, so that is aortic dissection. You must remember that. The arrow at CXR points to, the arrow at CXR यहाँ पे जो पॉइंट कर रहा है, सो लुक दिस इज नथिंग बट, ये देखो दिस इज ऑर्टिक नक्कल है ना, दैट इज आर्च ऑफ ऑर्टा. और ये क्या है हमारा, जनरली दिस इज ऑर्टा है ना, दिस इज सुपेरियर वेना कवा, दिस इज इंफीरियर वेना कवा, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियल अपीयरेंस. ठीक है, लेफ्ट एट्रियल जनरली यहाँ पे, और दिस इज द MPA मिडिल पल्मोनरी आर्टरी, मिडिल बोल रहा हूँ, मेन पल्मोनरी आर्टरी इज देयर. सो द आंसर हियर दे आर आस्किंग इज ऑर्टिक नकल. दिस इज ऑर्टिक नकल. और इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है जो वी हैव ऑलरेडी डन इन एनाटॉमी आल्सो. सो लुक, राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय सुपेरियर वेना cava, राइट एट्रियम स्मॉल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना cava. लेफ्ट हार्ट बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय ऑर्टिक नकल, पल्मोनरी बे, ऑरिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड जनरली द लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दिस इज जनरली CXR is pointing towards aortic knuckle. The following image shows, this image is showing what they are showing. Look, this line, this line, this line and this line. मैं बहुत देर पहले से बात कर रहा हूँ, CT ratio, CT ratio, CT ratio. So CT ratio is computed tomography ratio. No. This is cardiothoracic ratio. CT ratio here means cardiothoracic ratio. Estimation of cardiac size. It is used for the estimation of cardiac size and vertical line drawn through the mid-sternal line. Look, this vertical line, mid-sternal line, and maximum distance of right and left heart borders from the mid-sternal lines are added. Mid-sternal line से maximum distance क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट
हार्ट बॉर्डर की जनरली यहाँ पे करते हैं. नॉर्मल सीटी रेशियो इज लेस देन और इक्वल टू 50%. सो हियर इट इज सीटी रेशियो बीइंग measured. CT ratio being measured. Let's move ahead. In a patient with bronchopneumonia lung, finding on CXR. Look, in this finding on this CXR, is this cannonball metastasis? No, this is not cannonball metastasis. दोनों साइड नहीं है, एक ही साइड पे है. So this is generally patchy consolidation. No mediastinal shift is seen. So this is the diagnosis of bronchopneumonia. If lobar pneumonia, there will be diffuse consolidation. This is patchy calcifications. यहाँ पे दिख रहा है हमको. Consolidations, they are not calcification. Consolidation means some fluid is there in the alveoli. So that is patchy consolidation. यहाँ पर पैचेज में जनरली कंसोलिडेशन दिख रहा है. दिस इज द केस ऑफ जनरली ब्रोंकोनिमोनिया. लोअर निमोनिया में कैसा दिखता है? डिफ्यूज कंसोलिडेशन, होल एवरीथिंग विल बी consolidated. So this is patchy consolidation and diagnosis is bronchopneumonia. All of the following are true in chest X-ray, है ना. चेस्ट एक्सरे PA except PA यानी कि posterior anterior. Here you are seeing this. Look, this is the left हार्ट बॉर्डर एंड दिस इज द राइट हार्ट बॉर्डर. इफ यू सी दिस इज ऑर्टिक नर्व, ये ऊपर वाला क्वेश्चन का मेन पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे देख लो ये सब आप देख सकते हो राइट हार्ट बॉर्डर में. सो लुक, राइट वेंट्रिकल forms the right heart border, left ventricle forms the left heart border. Cardiothoracic ratio normally 50% or less than that. Right atrium forms the right heart border. So everything is right here. All of the following are true in chest X-ray PA except क्या, right ventricle forms the right heart border. This is not true. Generally right ventricles doesn't form any border in PA view. इन PA व्यू, पोस्टेरो एंटेरियर व्यू, एनी बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर फॉर्म नहीं होगा किसी जनरली राइट वेंट्रिकल से. इन लैटरल व्यू इट फॉर्म्स जनरली एंटेरियर बॉर्डर. ठीक है, राइट वेंट्रिकल फॉर्म्स एंटेरियर बॉर्डर इन लैटरल व्यू. Transesophageal echocardiography is better than transthoracic echocardiography because of better evaluation of, that is nothing but TEE, transesophageal echocardiography. Look, TEE is preferred over the routine transthoracic echocardiography for the following situations. Internal heart structures and path of blood flow in the congenital heart disease is better evaluated with TEE. To evaluate the effects of surgical intervention to the heart, such as repair of congenital heart defects, when TTE is indicated, that is transthoracic है ना, echocardiography is indicated, but circumstances, that is pulmonary disease like emphysema that may interfere with the ability to obtain the adequate image, will go for TEE. Mitral valve disease में blood clots or masses inside the heart, aortic dissection, implanted prosthetic heart valves to evaluate for blood clots in the heart prior to the cardioversion or ablation procedures. For all this, TEE is preferred over TTE. Most common congenital cardiac anomaly diagnosed in adulthood में, that is ASD. VSD is the most common in infancy. याद रखना है. Box shaped heart is seen in which of the following condition? Box shaped heart is seen in case of Epstein anomaly. Very important slide for you because everything I have written it here. Look, in case of TAPPR there will be figure of 8 or snowman figure appearance will be there. TOF में boot shaped, and this has been repeatedly asked in medicine, surgery, any every subject they are asking this. So TAPVR, figure of 8 or a snowman will be there. TOF in tetralogy of Fowler, there will be boot shaped or core in Sabo heart. Epstein anomaly, there will be box shaped heart. Just remember two things: boot shaped and box shaped. Boot shape is in TOF and generally box shape is in case of Epstein anomaly. TGA, transposition of great arteries, egg on string appearance is there. Persistent truncus arteriosus में sitting duct sign will be there. Coarctation of aorta, that is 3 sign on CXR and reverse 3 on the barium swallow will be seen. Pericardial effusion में water bottle appearance, whereas the constrictive pericarditis में generally egg in cup appearance will be there in case of constrictive pericarditis. Egg in cup, very important. This is very important slide for you. Everything I have written at one place. Kurzman spirals and flattening of the diaphragm is seen in, very important. This Kurzman spiral is seen in case of asthma. Flexible bronchoscope contains holes for all of these functions except to remove foreign body. Foreign body के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? Rigid bronchoscope is used for foreign body. Hampton hump is seen in, Hampton hump, this is seen in pulmonary embolism, PE. Westermarck sign is seen in pulmonary embolism. Continuous diaphragm sign is seen on X-ray. Diagnosis is pneumomediastinum. Continuous diaphragm sign, pneumomediastinum. Air bronchogram sign is seen in case of pneumonia. Already you have seen this air bronchogram sign is seen in case of pneumonia. Next is, okay, so this is not. Identify the X-ray chest showing the mass on the left lower lobe, है ना, ये यहाँ पे. So this is generally nothing but, if you have this book, you just see it there, you will see this is nothing but, ये अच्छा से अगर आप फिगर आप देखोगे, that is lung carcinoma is being shown here. Next, popcorn calcification is seen with pulmonary hamartoma. Pulmonary hamartoma.
टेरेक्टोमा, और एक पॉपकॉर्न हमने कहाँ देखा था, फाइब्रो एडिनोमा में। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजी इमेजिंग। इन केस ऑफ न्यूरोलॉजी इमेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर। आइडेंटिफाई द हेमरेज शोन इन द फॉलोइंग CT8। लुक, दिस इज जनरली कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दिस इज क्रिसेंट्रिक बनाना शेप, क्रिसेंट और बनाना शेप दिख रहा है हमको। डायग्नोसिस इज सब ड्यूरल हेमरेज, ठीक है, डायग्नोसिस इज सब ड्यूरल हेमरेज। कॉनकेव दिख रहा है, बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर और ये बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर अगर दिखा आपको, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जनरली सिटी हेड में, सो जनरली सिटी हेड में ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बाई कॉन्वेक्स और लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज गिविंग एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज और एपीड्यूरल हेमरेज। लुक, टू थिंग्स, सब ड्यूरल हेमरेज में क्रिसेंटिक बनाना शेप एंड जनरली बाई कॉन्वेक्स और लेंस शेप विल बी सीन इन एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल हेमरेज। सो दिस इज जनरली व्हाट, दिस इज, यहाँ पे हमको बनाना जैसा दिख रहा है, सो दिस इज जनरली सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज। अ कंस्ट्रक्शन वर्कर फेल फ्रॉम अ बैम्बू लैडर आफ्टर बीइंग एक्सीडेंटली हिट ऑन द हेड बाय हैमर ऑफ हिज कॉलीग, जनरली सिटी हेड इज शोन बिलो, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हैमर से लगा, वो फेल हुआ नीचे, एंड दिस इज जनरली डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर, द स्कल हैज बीन डिप्रेस्ड हियर एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स आर बीइंग सीन, सो दिस इज डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज अ न्यू बॉर्न इज सीन टू, थोड़ा सा ये जो PDF है दैट इज नॉट क्लियर। अ न्यू बॉर्न इज सीन टू हैव एन एबनॉर्मल लंप इन द लोअर बैक, लोअर बैक में एब्डोमिनल लंप है, आइडेंटिफाई द कंडीशन गिवन इन बिलो। लुक, यहाँ पे देयर इज अ लोअर बैक में जनरली अ लंप इज देयर, सो दिस लंप इज नथिंग बट मेनिंगोसिल, दिस इज अ मेनिंगोसिल, डज नॉट हैव स्पाइनल कॉर्ड एज द कंटेंट, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट इंटरिंग एज अ कंटेंट देयर, सो इट इज अ मेनिंगोसिल। अगर वो रहता तो वो क्या हो जाता, जनरली माइलिंगो, माइलिन यानी कि जनरली स्पाइनल कॉर्ड जाता। तो आगे देखो, और 35-year old फीमेल प्रेजेंट्स विथ थंडर क्लैप हेडेक और वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द इमेज। लुक हियर, यू आर सीइंग द स्टार ऑफ डेथ अपीयरेंस, दिस स्टार ऑफ death appearance, and this star of death appearance is seen in case of subarachnoid hemorrhage, acute subarachnoid hemorrhage. Most common cause is trauma, most common cause in spontaneous subarachnoid hemorrhage is berry aneurysm. Clinical feature will be thunder clap or worst headache of the life, positive or negative neck rigidity will be there. Initial investigation is NCCT, investigation of choice is CT angiography. Gold standard will be DSA, digital subtraction angiography. This will be the gold standard for acute SAH. Comment on the marked structure in the NCCT. In this NCCT, comment on the marked structure. So यहाँ पे marked structure कौन सा दिखा रहा है, ये marked structure दिखा है, ये बहुत क्लियर तो है नहीं, बट आई हैव टेकन अ ब्यूटीफुल क्लियर इमेज फॉर यू। सो लुक, ये ऊपर वाला कॉर्डेट न्यूक्लिया हो गया, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया हो गया, दिस इज अगेन लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया एंड दिस इज जनरली द थैलेमस, नीचे में जो दिख रहा है। सो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये साइड वाला पूछ रहा है, सो साइड वाला क्या हो जाएगा, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस विल बी देयर, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। आगे देखो, 30-year-old man had an road traffic accident on examination, limb shortening was noted, which of the following nerve is likely to be injured in this case, what will be the likely जनरली नर्व इंजर्ड। ये देखो, ये फीमोरल हेड दिखा रहा है हमको यहाँ पे, एंड दिस इज द लेसर ट्रोकेंटर दे आर शोइंग अस। सो यहाँ पे देखो, राइट फीमोरल हेड स्मॉलर देन द लेफ्ट फीमोरल हेड, जस्ट कंपेयर दिस बोथ, राइट फीमोरल हेड इज जनरली स्मॉलर देन द लेफ्ट फीमोरल हेड, लेसर ट्रोकेंटर इज मिसिंग, है ना, लेसर ट्रोकेंटर इज मिसिंग हेयर, right femoral head is smaller than the left femoral head and lesser trochanter missing. So this is diagnosis of posterior dislocation of the hip, and generally due to the injury to the sciatic nerve, usually the peroneal branch of the generally sciatic nerve. So this is sciatic nerve injury, आगे चलो, which arterial territory is involved in this CT scan image of the patient with brain infarction। यहाँ पे देखो, ये है पूरा का पूरा एरिया, एंड देयर लार्ज हाइपोडेंसिटी ऑन द राइट हेमिस्फीयर इज सीन, एंड दिस इज जनरली राइट हेमिस्फीयर पे इट विल बी जनरली सप्लाइड बाय मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जनरली supplies the frontal lobe, whereas the posterior cerebral artery generally supplies midbrain. Midbrain stroke में generally क्या होगा, posterior cerebral artery will be involved, and posterior communicating artery generally third nerve palsy में generally वहाँ पे ये दिखेगा। आगे देखो, identify the structure marked in the given image. In this given image, what is the structure marked? So यहाँ पे क्लियर तो है नहीं, बट दिस इज जनरली ऊपर वाला जो हमने फिगर देखा था, यहाँ से अगर हम देखेंगे, सो दिस विल बी जनरली गिविंग अस अ क्लियर कट दैट इज अ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, साइड में लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। आगे देखो, कॉर्डेट ऊपर हो जाता है, थैलेमस नीचे रहता है। आगे देखो, 65-year-old hypertensive patient on irregular medication
हैज हेडेक एंड BP 220 by 110, CT head is shown below, comment on the diagnosis. So यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में हाइपर डेंसिटी ऑन इंटरनल कैप्सूल एंड जनरली लेंटिकुलर न्यूक्लियस प्यूटामिन. Lenticular nucleus is equal to two things, that is nothing but putamen plus globus pallidus. You all know about this, and this is the figure of the NCCT. So this is putaminal bleed. So left side पे hypo क्या है यहाँ पे hyper density. So this is generally due to putaminal bleed. Identify the marked structure on the CT head. इस CT head पे ये जो marked structure दिख रहा है आई बॉल के पीछे. सो दिस इज नथिंग बट ऑप्टिक नर्व. दिस इज ऑप्टिक नर्व. दिस इज ऑप्टिक नर्व. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मार्क्ड स्ट्रक्चर शोन बाय द एरो. यहाँ पे कौन सा, ये वाला दिखा रहा है हमको, ठीक है. और ये अगर आपने इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई एनाटमी लेक्चर्स देयर आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस शेप बना के दिया, एंड दैट इज नथिंग बट मिड ब्रेन. दिस इज मिड ब्रेन. अ पेशेंट मेट विथ RTA इज अनकॉन्शियस एंड द CT स्कैन डज नॉट शो any finding except for a few petechial hemorrhages. What is the probable diagnosis there? So this is generally CT scan does not show any finding except for few petechial hemorrhages. So this is generally investigation of choice. हमने पढ़ा था सारे जगह पे MRI होगा, एक जगह छोड़ के that was diffuse axonal injury. So ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ से exceptions. Most of the times our questions are made from the exceptions. So generally diffuse axonal injury. Clinical feature will be high energy trauma, the road traffic accident plus low GCS, Glasgow Coma Scale, and comatose condition will be there. Initial investigation NCCT, normal or टाइनी माइक्रोब्लिट्स जो कि यहाँ पे बताया गया है. सो NCCT पे जनरली टाइनी माइक्रोब्लिट्स और नॉर्मल दिखेगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी MRI, एंड ऑन MRI you will be able to see blooming that suggests the axonal shearing, and that is giving us the diagnosis of diffuse axonal injury. A patient with brain metastasis had to undergo head and neck irradiation. What is the most common delayed symptom with head and neck irradiation? With the most common symptom with head and neck irradiation generally radiotherapy के बाद, that is nothing but xerostomia. Dysphagia, it is in case of chest radiation, है ना. And anhidrosis, that is due to the damage of the sympathetic ganglia in Horner syndrome. आगे देखो, identify the pathology in the shown CT. This question has been asked so many times, xerostomia वाला, ठीक है. Identify the pathology in the shown CT. यहाँ पे देखो लेंस शेप या फिर दोनों साइड दिख रहा है. सो दिस इज जनरली मैसिव एपिड्यूरल हैमरेज. सो दिस इज एपिड्यूरल हैमरेज, ठीक है. कॉन्केव दिखता है तो दैट वाज जनरली सबड्यूरल हैमरेज. यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था ना. लेट मी शो लुक, दिस इज सबड्यूरल हैमरेज, बनाना शेप है ना, कॉन्केव शेप. और बाई कॉन्वेक्स और लेंस शेप जनरली एक्स्ट्राड्यूरल और एपिड्यूरल हैमरेज. एक्स्ट्राड्यूरल और एपिड्यूरल हैमरेज बोथ आर द सेम थिंग. सो दिस इज मैसिव एपिड्यूरल हैमरेज. आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो. इन दिस इमेज ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द फोर्थ वेंट्रिकल. दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल. ऐसा वाला सेक्शन दिया हुआ है. दिस ऑल वी हैव डन इन जनरली आवर एनाटॉमी. एंजियोग्राफी ऑफ ब्रेन, blood vessels of brain as is shown in the image. Identify the artery marked with arrow. यहाँ पे देखो ये हमको क्या दिखा रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस अगेन वी हैव कंप्लीटेड इन आवर एनाटॉमी. ये देखो एंटेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ना, ये पूरा नीचे से देखो PCA PCOA है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. सो जस्ट यू हैव टू जनरली फाइंड व्हाट काइंड ऑफ आर्टरी इज दिस. यहाँ पे देखो, सो दिस व्हाट काइंड ऑफ आर्टरी इज दिस. दिस इज नथिंग बट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. सो दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इन द गिवन इमेज व्हाट इज द स्ट्रक्चर मार्क्ड विथ एरो. यहाँ पे जो एरो से मार्क किया गया स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस? सो दिस इज नथिंग बट मिड ब्रेन. ऑल ऑफ दिस हैज बीन डन इन न्यूरो एनाटॉमी. पूरा का पूरा मैंने एकदम फिगर बना के आपको दिखाया वहाँ पे. जस्ट गो एंड सी देयर. मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन डन इन ब्रेन ट्यूमर. इन केसेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन विल बी ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन. के लिए MRI इज द बेस्ट चॉइस. इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर सब एरेक्नोइड हैमरेज. सब एरेक्नोइड हैमरेज में जनरली CT स्कैन इज द investigation of choice. Intracranial calcification is best diagnosed by intracranial calcification. It will be best diagnosed by calcifications के लिए always CT scan is the choice. The most appropriate technique for mammography. Mammography. Look, we have now entered mammography and obstetrical imaging. So mammography में generally there will be medial lateral oblique view. Look, there are numerous mammography views that can be broadly split into two groups. One is a standard view, that is mediolateral oblique, and craniocaudal. Whereas the supplementary views will be additional information on problem solving. Look, the mediolateral oblique, that is view, is one of the standard mammographic view. It is the most important projection as it allows to depict the most breast tissue. That's why the mediolateral view is the oblique view is the best. The mediolateral view loses significant tissue volume in the upper outer quadrant of the breast, where statistically the most breast cancers are found. By doing an MLO view, you get extra tissue without extra exposure. ठीक है. So this is generally mediolateral oblique view. The most appropriate technique for mammography is generally mediolateral
lateral oblique view. Which of the following statement regarding mammography is false? It can detect 95% of early breast cancer. That is true. This is true. Normal mammogram rules out. No, it cannot rule out breast cancer. So normal mammogram is not able to rule out the breast cancer. It's सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है. नेक्स्ट देखो, मैमोग्राफी इज अ सेफ इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर. 0.1 सी जीवाई की रेडिएशन एक्सपोजर होती है, विच इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई इट इज जनरली अ सेफ इन्वेस्टिगेशन. द सेंसिटिविटी ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इंक्रीजेज विथ एज एज द ब्रेस्ट बिकम्स लेस डेंस. वेरी राइट, दिस इज राइट. आगे चलो. Obstetrical imaging now. A 35-year-old female presents with a history of nausea and vomiting. She is undergoing IVF treatment. What is the likely diagnosis? She is going under IVF treatment. मैंने एक आपको पल्स ऑफ स्ट्रिंग यूएसजी वाले चैप्टर में दिखाया था. यहाँ पे देखो, वहाँ पे फॉलिकल्स छोटे छोटे थे, यहाँ पे देखो फॉलिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं एंड आईवीएफ की हिस्ट्री भी दी गई है. सो आईवीएफ की, सो नाउ इट कांट बी पीसीओडी. देयर इट वाज पीसीओडी, बट नाउ हिस्ट्री ऑफ आईवीएफ इज देयर एंड ओवेरियन. सो इट विल बी गोइंग टुवर्ड जनरली ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. दिस इज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. Enlarged follicles plus history of IVF plus minus pain abdomen. This is case of ovarian hyperstimulation syndrome. Don't be confused with PCOD. Never be confused with PCOD. PCOD हो ही नहीं सकता इसमें. आगे देखो, व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस. पीसीओडी में क्या होगा, छोटा छोटा होगा, छोटा 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 छोटा, एंड दिस विल बी जनरली फॉर्मिंग अ नेकलेस लाइक अपीयरेंस और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अपीयरेंस. व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द गिवन इमेज. यहाँ पे देखो, ये स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है, दिस इज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस. सो दिस इज गिविंग डायग्नोसिस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी. इक्टोपिक प्रेगनेंसी में लीजन इन फैलोपियन ट्यूब विल बी देयर एंड रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन में फीटल पार्ट्स विल बी शोन. पीसीओडी में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विल बी शोन. सो दिस इज जनरली मोलर प्रेगनेंसी, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस. A postmenopausal female with intermittent pelvic pain presents to the OPD and X-ray abdomen was performed. What is the likely diagnosis? Here the likely diagnosis. Look, radiopaque shadow in pelvis is seen. The radiopaque shadow is seen in the pelvis. So that is nothing but calcified fibroid. This is a calcified fibroid case, and generally calcified fibroid case ovarian mass में there will be CT abdomen will be the choice. chocolate cyst के लिए it can only be seen on laparoscopy. so ये किसके लिए हो जाएगा? This is calcified fibroid. Father of obstetrical ultrasound. Father of obstetrical ultrasound is nothing but Ian Donald. Doppler Jones is the father of Doppler. John Wild is the father of overall USG, and Hausenfeld is the father of the CT scan. Hausenfeld is the father of CT scan. By ultrasonography, the earliest sign of conception on ultrasonography will be a small white gestational ring that can be seen on transvaginal generally sonography. So we have completed, I think, yes, we have already completed this whole radiology now, and I'm very happy to complete this radiology in a very short and very timely manner. Now we'll move with ENT. You guys are a little bit slow. You don't watch all the videos, and that's why I also get demotivated time and again. I leave just making these videos. So just be a little bit more active, and then we can do everything. So this is generally the end of this radiology. Complete radiology has been done in 3 parts: radiology part 1, part 2, and part 3. You just can go on the channel and just see all those radiology, and you will be able to solve every questions of the radiology, because I have already just annotated everything from your प्रेप लैडर मैरो, कुछ भी जो भी आप पढ़ते हो, वहाँ से जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं दिए होते हैं आरआर में, आई हैव एनोटेटेड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट इन दोज questions only. So this will be your ready to go revise plan and revise material at last time when you go for your exam. So this much for this video. I'll try to meet you in the next video.